So very good evening, all the participants. Welcome back after the Diwali break. Let me share my PPT with you. This I have already shared in the group. I hope you have got it. I'll share it in the chat box also. Okay. So I've shared it in the chat box also. Now, this insolvency resolution process for MSME. Basically, this pre-pack insolvency resolution process is restricted only for MSMEs and not for all types of corporate persons. This is the first thing we have to remember. And it was introduced by way of an ordinance post COVID. Section 54A to 54P are there, which cover this entire process. So, ordinance was passed on 4th of April 2021 post COVID to amend the Principal Act, and then it was introduced by way of an amendment also. Purpose, basically COVID impacted business and the government wanted to protect the MSME sector. So they brought this another resolution process, but restricted to MSMEs only. So there was an amendment to section 4 because in section 4 CIRP is applicable when the default is 1 crore rupees or more. So a proviso was added that the central government will prescribe the applicable limit separately for MSMEs and which shall not be more than 1 crore. And then the government issued a notification and they prescribed this limit for MSMEs as 10 lakhs. So if a default occurs, default is necessary even for this pre-pack process. And if the default amount is 10 lakhs or more, then the CD, which is an MSME, can initiate this pre-pack process. Now another question comes. What if the default amount is 1 crore or more and the corporate debtor is an MSME? So then it has both the options. It can go in for pre-pack, it can go in for normal CIRP also. Another important amendment is regarding this base resolution plan. So there is a concept of base resolution plan in case of pre-pack process, and it says it means a resolution plan provided by the corporate debtor under clause C of subsection 4 of section 54A. And the definitions where the word CIRP is appearing, the word PPIRP is added in all relevant sections and amended accordingly. And all forms under this regulation, they start with P. Now, who is eligible? Eligible is an MSME only under section 7, subsection 1 of the MSME Development Act. Default amount, for default, they have added a separate proviso, minimum default, 10 lakh rupees as of now. But the central government can increase this default amount to 1 crore rupees. Right? Another important concept is that an approval from unrelated financial creditors has to be taken, both regarding the appointment of insolvency professional and regarding the approval of this filing of application. So these are the two things. This we have already covered. Now, another very important thing is regarding the limit of investment and turnover. So as you know, the budget of 2025 made an amendment to the MSME definition. But
that amendment is applicable from 1st of April. So for our syllabus, I think the cutoff date is 4th of February 2025. So for that, this definition is applicable. Both manufacturing and services have been clubbed together. And for micro, it is if investment does not exceed, the word used is does not exceed. So even if it is exactly 1 crore, it will be covered under micro. And turnover is 5 crores or more. Now suppose investment is 1 crore, but the turnover is 10 crores. Then it will be shifted to the next criteria. So small investment doesn't exceed 10 crores and turnover doesn't exceed 50 crores. Medium investment does not exceed 50 crores and turnover does not exceed 250 crores. Now suppose there is upward change, because there could be a change. A company is coming under particular sector, say micro, small or medium. So naturally, in case of upward change, it will maintain its prevailing status till expiry of 1 year from the close of financial year of registration. And in case of reverse graduation, suppose the turnover is reduced or the investment is reduced, so then the enterprise will continue in its present category till the close of the financial year, and benefit of the changed status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such change took place, because it is a beneficial legislation. This MSME Act, it gives certain benefits to the corporates or to the, it could be a non-corporate also. MSME could be a corporate or a non-corporate. But this pre-pack process is restricted only to MSMEs in the corporate sector. This you can go through on your own. So MSME issued an MCA issued a notification dated 9th of April, and 10 lakh rupees was notified as the minimum amount of default. Now, what is the eligibility under section 54A? So, section 54A, you can identify with the application. Who can apply? So, CD is eligible to submit a resolution plan. So, this is one of the criteria that the CD should be eligible to submit a resolution plan under section 29A. If he is not eligible, then he cannot apply for this pre-pack process. So 29A says who is not eligible to be a resolution applicant: undischarged insolvent, willful defaulter, control is with such a person whose account is NPA, convicted for any offense punishable with imprisonment, disqualified director, prohibited by SEBI, is a promoter of inordinate transactions. So all these things, they are covered under 29A. If you are ineligible under 29A, then you cannot go in for this pre-pack process. Second is name of the resolution professional, IRP or RP, is proposed and approved. So here, before filing the application, the unrelated financial creditors, they propose the name and it is approved also. But who can propose the name? FC is not less than, who have not less than 10% in value of the total debt. They may propose the name. So there could be even more than one persons who are having not less than 10% of the debt. So they may propose. Suppose 5 financial creditors are there who have debt of say 10% or more. So then all the 5 can propose, and then there will be voting, and FC is representing 66% of the total debt. They shall approve such proposal with terms of appointment of RP in form number P3. Right? Then there is a related regulation which is related with section 54A, and it says that the CD shall serve notice of meeting to all FCs, because at this stage even RP is not there. So CD shall serve the notice of meeting to all the FCs except related parties at least 5 days before the meeting, unless a shorter time is agreed by all of them. And the notice has to be given in form P2, and it will indicate the date, time, venue, list of creditors with amount due. And the financial creditors who are not related parties of the corporate debtor and have not less than 10% of the value of the total financial debt, they may propose the name of the insolvency professional. So there could be more than one names also, which may be proposed.
And where there are no FCs or all the FCs are related parties, then COC shall be of operational creditors only, and above provision will be applicable to OCBD. Now 54A2F. So first of all, there has to be a declaration by directors or partners of the CD. And what is the difference here? In case of voluntary liquidation, the declaration has to be by majority of the designated partners. But here it is partners only. So 54A, if we see 54A2F, so it says majority of the directors or partners. In case of voluntary liquidation, if we see, it is majority of the designated partners. That is the difference. So majority of directors or partners of the CD, they have made a declaration. This declaration has to be in a particular form. Form is P6. And they shall state that the CD shall file an application, because at this stage, at the stage of making of declaration, they have not yet filed the application. So they state in the declaration that the CD shall file an application for initiating PPIRP within a definite time period not exceeding 90 days. So not 90 days is the maximum period. They may file earlier also. And they will write the date in form P6. If you see form P6, which I have enclosed here. So in form P6, they will specify the date by which they will be filing the application, and that the PPIRP is not being initiated to defraud any person. So some sort of similarity with voluntary liquidation provisions. And the name of the IPA proposed and approved to be appointed as RP under clause E of subsection 2 of section 54A. So these are the things. Then members of the CD, they have passed a special resolution approving the filing of an application. So besides declaration, then members of the CD, they will pass a special resolution and CD to submit following information to FC. Copy of the special resolution passed by members of the CD, declaration of directors, partners in Form P6, and base resolution plan, which conforms to the. So, base resolution plan is some sort of one-time settlement, which this base resolution plan is prepared by the corporate debtor itself. So this base resolution plan, which conforms to the requirements referred to in section 54K, which primarily says that there shall be no haircut to operational creditors and such other conditions as may be specified and such other information and documents as may be specified. So CD shall furnish all this information to the FC, and CD shall obtain approval from its FC, not being its related parties, representing not as the 66% in value of the financial debt due to such creditors for the filing of an application for initiating PPIRP in Form P4. So, two approvals from unrelated financial creditors. First, for appointment of RP, and second, for approval of filing the application. And where CD doesn't have FC or FCs are related parties, approval of the OC shall be obtained as per this section. FC's approval. Section 54A3. The corporate debtor shall obtain an approval from its financial creditors not being its related parties, representing not less than 66% in value of the financial debt due to such creditors for the filing of an application for initiating prepaid insolvency process in such form as may be prescribed, provided if they don't have, then it shall be by such persons as may be specified, and it says 10 operational creditors. So prior to FC's approval, CD must provide them declaration from majority of directors or partners in Form P6, special resolution, base resolution plan, and other document. Here there is a question. Whether suppose the company has been formed for a specific purpose. So in that case, whether instead of special resolution, ordinary resolution can be passed.
The answer is no. Like in case of voluntary liquidation, we have seen that in certain situations, a ordinary resolution could be passed if the company has been formed for a specific duration or for a specific purpose. But there is no such provision in case of PPIRP. It says members of the corporate data have passed a special resolution, or at least three-fourths of the total number of partners, as the case may be, of the corporate data have passed a resolution approving the filing of the application. So in case of LLP, it is the number, three-fourths of the total number of partners. And in case of company, it is special resolution. Right? ये हो गया अच्छा. Now, no unrelated financial creditors. So, if all the financial creditors are related, then it says where the corporate debtor has no financial debt or where all the financial creditors are related parties, the applicant shall convene a meeting of operational creditors who are not related parties of the corporate debtor, and provisions of sub-regulation 1 to 7 shall mutatis mutandis apply. So, committee with only with operational creditors, where the corporate debtor has no financial debt or all financial creditors are related parties, the committee shall consist of operational creditors being not related to the corporate debtor. 10 largest operational creditors by value, and if the number of operational creditors is less than 10, the committee shall include all such operational creditors. One representative elected by all workmen other than those workmen included under clause A, and one representative elected by all employees other than those employees included under clause. Now, what will happen if there is only if the committee is with only creditors in a class? So, where the corporate debtor has only creditors in a class and no other financial creditor who are not related parties, the committee shall consist of only the authorized representative or representatives, right? And the authorized representative of creditors in a class shall be entitled to receive fees for every meeting of the committee attended by him in the following manner. Number of creditors 10 to 100. Fees per meeting is 15,000, 101 to 1,000, 20,000, and more than 1,000, 25,000. But here, an important point to note is that there has been a change in the CIRP regulations. In CIRP regulations, they say that the fees also has been revised, but there is no corresponding change in case of pre-pack process. So please go through the related provisions in case of CIRP where there is a change, but here to my understanding there is no such change. क्यों पूजा जी कुछ चेंज है क्या? नो सर, पीपीआईआरपी में नहीं है सर। है ना, सीआईआरपी में हो गया ना चेंज. सीआईआरपी में है सर। हाँ, तो बस ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और एग्जामिनर ये बात पूछ सकता है आपसे. व्हाट आर द कंडीशंस? 54A2. 54A2 क्या कहता है भाई? देयर शुड नॉट बी एनी सीआईआरपी और पीपीआईआरपी ड्यूरिंग द पास्ट 3 years. It should not already be undergoing CIRP. There should be no liquidation order. It should be eligible under 29A. Then FC shall propose the name of the IP and majority of the directors or partners shall file a declaration and special resolution or resolution by three-fourths of the partners. तो ये कुछ conditions हैं which are given in section 54A2. डिक्लेरेशन क्या होगा? majority of directors और partners. Voluntary liquidation में क्या होता है? designated partners. ठीक है, क्या क्या लिखते हैं इसमें? That they shall file the PPIRP application within definite time period not exceeding 90 days. PPIRP is not being undertaken to defraud any person, and the name of the IP proposed and approved by unrelated financial creditors. ठीक है. Now 54B. 54B क्या बोलता है? 54B में क्या है? बिफोर इनिशिएशन. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड हिज ड्यूटीज बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी. क्योंकि देखो हमने डिक्लेरेशन में क्या बोला? हमने डिक्लेरेशन में बोला कि हम लोग 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे. अब 90 डेज तक क्या करोगे आप? आपने डिक्लेरेशन में लिख दिया कि भाई वी शैल बी फाइलिंग द एप्लीकेशन विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज. अब 90 डेज तक आपने क्या करना है? 90 डेज तक अभी क्या है
ये जो आरपी आपने अपॉइंट कर दिया, इसकी कुछ ड्यूटीज है। ये चेक करेगा कि एमएसएमई है या नहीं है, कोई पीपीआईआरपी सीआईआरपी तो नहीं चल रही, 29A में एलिजिबल है कि नहीं, बेस रेजोल्यूशन प्लान जो है, वो सारी बातें ये कौन चेक करेगा? आरपी अभी आरपी की भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है बेसिकली। प्रपोज किया। हाँ, प्रपोज किया हुआ है ना। तो ये कुछ बिफोर इनिशिएशन ड्यूटीज है, और उसकी फीस भी अकॉर्डिंगली होगी। इसमें तीन तरह से फीस मिलती है आरपी को। सबसे पहले बिफोर इनिशिएशन, भाई उसकी फीस क्या लोगे आप। सेकंड, अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो क्या फीस लोगे। और थर्ड, अगर इसमें क्या होता है, पीपीआईआरपी का एक और यूनिक फीचर है कि द जी। कंट्रोल लाइज विद द सीडी ओनली। सीडी। हाँ, तो सीडी ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे कंप्लायंसेस के लिए। जीएसटी रिटर्न भरनी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, कोई लाइसेंस रिन्यू कराना है, सीडी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। आरपी क्या करता है? आरपी मॉनिटर करता है। सीओसी भी होती है, मॉनिटर भी करता है। लेकिन अगर सीडी, हमने क्या डिक्लेरेशन दिया कि इट इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, तो अगर उसको लगता है कि भाई इट इज बीइंग फ्रॉडुलेंटली कंडक्टेड, तो फिर सीओसी उसको रिमूव भी कर सकते। ठीक है। तो 54B, बिफोर इनिशिएशन, बी से बना बिफोर इनिशिएशन, ए से बना एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड इज ड्यूटीज बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी। सो आरपी शैल हैव द फॉलोइंग ड्यूटीज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सबसे पहले क्या करना है, इसको एक रिपोर्ट बनानी है अपनी फॉर्म P8 के अंदर। ठीक है। क्या क्या रिपोर्ट में लिखेगा? कंफर्मिंग वेदर द कॉर्पोरेट डेटा मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 54 है। ठीक है। रिक्वायरमेंट हमने देख ही ली, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सारी रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस देख लेगा। है ना, मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, है ना? यस सर। हाँ। तो प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन फॉर्म P8 confirming whether the corporate data meets the requirements of section 54A and the base resolution plan conforms to the requirements referred to in clause C of subsection 4 of section 54A. That is base resolution plan which conforms to the requirements referred to in section 54K। वो बेसिकली क्या है कि there is no haircut, इनिशियली ये देखते हैं, और बाकी वैसे अदरवाइज कंप्लाइंट है। फाइल सच रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड एज में बी स्पेसिफाइड एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी स्पेसिफाइड। तो ये इसकी ड्यूटीज हैं बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी। ठीक है। Above responsibilities of IP shall cease on application for initiating PPIRP is admitted or rejected by AA as the case may be। ठीक है। एंड सीडी, और सीडी फेल्ड टू इनिशिएट एप्लीकेशन टू एडजुडिकेट। अब मान लो सीडी ने एप्लीकेशन ही फाइल नहीं किया 90 डेज के अंदर, तो भी इसकी ड्यूटीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 54A2F। और फीस पेबल क्या होगी? तो फीस पेबल टू आरपी फॉर ड्यूटीज अंडर 54B1 एज अबाउ टू बी बोर्न बाय सीडी इन केस सीडी कुड नॉट इनिशिएट। मान लो सीडी इनिशिएट ही नहीं करता, तो फीस कौन देगा? फिर सीडी देगा। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ पीपीआईआरपी कॉस्ट। ठीक है। एंड सीडी विल मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर दिस फीस एंड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय आईपी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय आईपी। ठीक है। तो ये हमारा 54B है। ड्यूटीज क्या होंगी? एक, इसको रिपोर्ट बनानी है फॉर्म P8 के अंदर, कुछ और रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स जो बीच में भी स्पेसिफाइड, परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, ये उसकी ड्यूटीज। ये हो ही गया। नाउ 54C। 54C क्या है? सी से क्या बना? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट या इनिशिएशन ऑफ पीपीआई। कई बार ये भी पूछ लेता है कि सेक्शन 54C किस चीज से रिलेट करता है, तो इसीलिए आपको 54A to P भी याद रखना है। ए क्या है? एप्लीकेशन, बी क्या है? बिफोर इनिशिएशन, सी क्या है? कमेंसमेंट, डी क्या है? ड्यूरेशन, ऐसे। ठीक। इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी फॉर सीडी, section 54C। So if conditions under section 54A are fulfilled, CD can initiate application under PPIRP। अच्छा, इसको करने से पहले अब आप ये बताइए कि जो फॉर्म P8 है, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट किसको देनी है? ये जो फॉर्म P8 की रिपोर्ट है, ये देनी किसको है? ये सीडी को रिपोर्ट देगा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा? किसको रिपोर्ट देगा?
या एप्लीकेशन के साथ लगाएगा, क्या करेगा? ये देखिए, इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, यहां मिल जाएगा। विद द बोर्ड सर। हम्म फाइल सच रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड। 54 बी में है सर। हम्म। ये हो ही गया हमारा। 54C। 54C आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, सी से कमेंसमेंट, इनिशिएशन। कंडीशंस फुलफिल है तो सीडी कैन इनिशिएट एप्लीकेशन अंडर पीपीआईआरपी। फॉर्म फॉर्म इसके लिए फॉर्म 1 है, तो एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन फॉर्म 1 accompanied with affidavit, documents or records as referred in annexures therein in electronic form along with a fees of 15,000 rupees। ठीक है, इसमें तीन पार्ट है फॉर्म 1। पार्ट फर्स्ट है अबाउट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड सीडी। सेकंड पार्ट आईपी का डिटेल्स है, और थर्ड पार्ट है डिटेल्स ऑफ द क्रेडिटर्स और डेट। ठीक है, and where electronic facility is not available or data is a bulk size, so it can submit in USB। ठीक है, the corporate applicant under sub rule 1 shall serve a copy of the application to the board by registered post or speed post or by hand or by electronic means before filing with the adjudicating authority। ठीक है, and the application shall be filed before the adjudicating authority in accordance with these NCLT rules। A corporate applicant shall inform the adjudicating authority about the filing of any winding up petition against the corporate debtor after becoming aware about such filing। Applicant along with application shall furnish copy of special resolution passed, approval of 66% financial creditors, consent of IP in Form P1, and a declaration regarding existence of any transactions, those of avoidance nature। तो यहां पर क्या है, यहाँ सीडी खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर रहा है अवॉइडेंस नेचर की ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, now A has got 14 days, so A within 14 days shall accept if it is complete or reject the application, and before rejection 7 days time will be given to the applicant for correction। अब आपने क्योंकि CIRP पढ़ लिया, आपने वॉलेंटरी लिक्विडेशन पढ़ लिया, तो कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती हैं उससे। ठीक है, जैसे 14 डेज का पीरियड सारे प्रोसेस में सेम ही है, और बिफोर रिजेक्शन 7 डेज टाइम सभी प्रोसेस में दिया जाता है। एंड पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट इज द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ 54D। 54D, डी से क्या बना, ड्यूरेशन। तो 54D क्या कहता है कि पीपीआईआरपी टू बी कंप्लीटेड विद इन 120 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। ठीक है, तो ये जो कमेंसमेंट डेट है, यहां से कमेंसमेंट डेट क्या है, डेट ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और इसके 120 डेज के अंदर आपको जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इस 120 डेज के भी दो पार्ट है। पहला, 90 डेज के अंदर आपको अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है, और 30 डेज फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। और अगर कोई प्लान नहीं आता बाय 90th डे, तो आपको 91st डे को एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस पीपीआईआर। अब ये जो 120 डेज है, ये वो 90 डेज के अलावा है। 90 डेज तो अलग है, 90 डेज में तो पहले वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसके लिए है उसके पास। ठीक है, और ये 120 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन बाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो पीरियड क्या होगा, पीरियड शैल बिगिन फ्रॉम द prepackaged insolvency commencement date and it shall end on the date on which an order for approval of resolution plan or termination of PPIRP or initiation of CIRP is passed by the adjudicating authority। ठीक है, अब 54E। 54E क्या बोलता है, इफेक्ट। ई से क्या बना, इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ एडमिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाई ए। क्या होगा, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall on the prepackaged insolvency commencement date along with the order of admission declare moratorium। तो यहां पर मोरेटोरियम लग जाएगा, और सेक्शन 14 का रेफरेंस दे दिया स्पेसिफिकली। ठीक है, सो सेक्शन 14 shall apply mutatis mutandis। अपॉइंट आरपी।
as named in the application by CD or based on recommendation by board if disciplinary case is pending against proposed RP. ठीक है. And RP is so appointed to cause public announcement within 2 days from CD in form 9. तो यहां पर फॉर्म P9 है फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट. इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर. ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट है ये पेपर में नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि PPIRP है, ये MSME है, छोटे कंपनी है. तो इस केस में क्या होगा, आपको ये जो फॉर्म 9 है ये भेजना है. किसको भेजना है? एवरी क्रेडिटर लिस्टेड इन फॉर्म P2. ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कौन बना रहा है? सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बना रहा है आपका CD. ठीक। ठीक है. तो CD ने जो भी नाम दिए उन सबको भेजना है. सेंड टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एंड दी बोर्ड. ठीक है. तो ये एक और यूनिक फीचर है इसका कि यहां पर पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो पेपर में नहीं हो रहा है. ठीक है. उसके बाद में 54G. 54G क्या बोलता है? 54G बोलता है आपका कि CD विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट सबमिट लिस्ट ऑफ क्लेम्स. क्योंकि यहां पर क्या है, CD ही इंचार्ज है. अभी देखो यहां कस्टडी एंड कंट्रोल वाला फंडा भी नहीं है. जैसे क्या होता है नॉर्मल CIRP में कस्टडी एंड कंट्रोल चला जाता है RP के पास. यहां कस्टडी एंड कंट्रोल CD के सीडी के पास ही पास। रहेगा. ठीक है. तो सेक्शन 54G क्या बोलता है? CD विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट सबमिट लिस्ट ऑफ क्लेम्स एज अपडेटेड एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सबमिशन टू RP इन फॉर्म P10. अब ये फॉर्म P10 आ गया. एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान. अब ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किसको बनाना है? ये भी CD को ही बनाना है. ठीक है. एंड इफ सबमिटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज मिसलीडिंग. अगर मान लीजिए इस, क्योंकि लिस्ट तो CD बना रहा है, अब लिस्ट में मान लीजिए किसी का नाम इंक्लूड नहीं किया, तो फिर उसको क्या, वो क्या होगा, वो पर्सन जो है ही कैन अप्रोच द कंपिटेंट कोर्ट. तो वर्ड यहां यूज किया गया कोर्ट, यहां एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यूज नहीं किया गया. तो अगर कोई कंपेंसेशन लेनी है तो ये जो कोर्ट होगा हैविंग कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन उसको अप्रोच करेगा. ठीक है. और जो भी डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो ही विल बी मेड पर्सनली अकाउंटेबल. So if submitted list of claims or preliminary information memorandum is misleading, every director or person providing such misleading information shall be liable to every person who sustained loss due to such misleading information and shall be liable to pay compensation to all such persons if information is submitted without the knowledge of person. He will not be liable for action. ठीक है. अगर वो कहता भाई मेरी नॉलेज के बिना हुई है तो फिर वो लायबल नहीं होगा. And person who sustained loss may move to competent court for seeking compensation for loss so sustained. ठीक. Then he will submit the base resolution plan by the CD to RP within 2 days of the commencement date and RP to present this plan to COC. ठीक है. तो जैसे ही ऑर्डर हुआ, ऑर्डर के बाद में क्या क्या एक्शन हो रहे हैं? एक तो पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है. पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है कौन? RP विद इन 2 days. और पब्लिक अनाउंसमेंट कौन से फॉर्म में है? P9 में है. और ये किस किस को भेज रहे हैं? पब्लिक पेपर में नहीं भेज रहे. जो भी क्रेडिटर जिसका नाम P2 लिस्ट में है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, और जो वेबसाइट है ऑफ द CD एंड द बोर्ड. ठीक है. CD क्या कर रहा है? CD एक तो बनाएगा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एक फिर लिस्ट बनाएगा इन फॉर्म P10, और एक बनाएगा बेस रेजोल्यूशन प्लान. बेस रेजोल्यूशन प्लान तो उसने पहले भी बनाया हुआ है ना. तो उसी में अगर कोई अमेंडमेंट करना होगा तो ये करेगा. यही मतलब है इसका. ठीक है. 54D हमने पहले ही देख लिया कि मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका 120 days है. ठीक है. एंड RP shall submit the resolution plan to AA as approved by the COC within 90 days. And where COC does not approve any resolution plan within the period of 90 days, RP on the expiry of 90 days, मतलब on 91st day, shall file an application with the adjudicating authority to terminate the PPIRP process. ठीक. लाइट का थोड़ा सा, मैं जरा नीचे जाता हूँ.